guests, Dr. Uttam Sahai, Mr. Saurabh Saxena, Mr. Vivek Nanda, faculty members, and students in today's panel discussion on the topic Impact of Social Media on Talent Acquisition. Geeta Rattan International Business School was established in the year 2004. GIBS is affiliated to Guru Gobind Singh Indraprasth University, Delhi and is approved by All India Council for Technical Education, Government of India for its management courses and Bar Council of India for its law courses. The institute conducts programs of MBA, MBA International Business, BBA, BBA LLB and BA LLB. The institute is accredited as Grade A by NAAC and assessed as Category A+ by Joint Assessment Committee of Government of Delhi and GGS IP University. The institute has been rated Grade A by Academic Audit Cell of GGS IP University consecutively from the past 8 years. GIBS has also been rated as number 2 by Times B School Survey in 2018, 2019 and 2021. Now I would like to draw your attention towards our esteemed guest for today, Dr. Uttam Sahai, Mr. Saurabh Saxena and Mr. Vivek Nanda. Dr. Sahai is a performance-oriented human resource generalist professional with over 28 years of rich experience in human resource function cutting across manufacturing and mostly in telecom industry and managing the function in line with contemporary HR practices and trends. Dr. Sahai in the past worked with Vodafone Idea, Jindal Steels and Escortel Mobile Communication. He has also held HR leadership position for more than 20 years. He has expertise in various HR fields like talent acquisition and management, employee engagement and managing employee relations, etc. Sir is currently associated with Moorish Foods Limited as one of the directors responsible for HR, business strategy and new projects, etc. Now I would like to introduce our second guest, Mr. Saurabh sir. He is a generalist with more than 20 years of experience in core HR operations spanning travel and tourism, .com and media industries. He is specialized in formulating and implementing HR policies and processes, designing and managing compensation and benefit programs. He has also worked as a personnel officer in ITC Limited. After that, he worked as human resource manager in Network 18 Group for almost a decade. And he is also a co-founder and partner in Simply HR Solutions LLP. Now about Mr. Vivek sir. He is a corporate leader with more than 30 years of rich experience. He has worked as a senior manager in top Japanese MNCs like Sharp and Ricoh. He has also worked with Bank of America. He has worked as a national sales head with large sales teams and handled strategic business partnerships on the pan-India basis. He has conducted many cross-functional trainings on national basis. He has trained and mentored more than 3,000 employees in various multinationals. Having vast experience in HR functions like employee recruitment, inductions and goal-specific trainings. Sir has also delivered guest lectures at leading colleges and universities like JIMS, MIT and Jaipur. He has also been delivering lectures as a motivational speaker and has attended many national and international conferences as a keynote speaker. We welcome you all, sir. And we are honored for your presence with us today. All of you. Our director sir to present accepting to our guest, Dr. Uttam Sahai.
Now we move ahead and begin with the session. Over to the guest now. Please take it. Good afternoon to all of you. So you have had a brief introduction about myself, who am I? But that is what I was. Currently I am like you, and about a couple of months back I have completed my post PhD and submitted my thesis, and now I have been awarded. The first thing I would like to bring here is that all of you should believe in continuous learning. So there is no age for learning. So keep learning something new, and that will make you ready for any assignment. So with this introductory note, I would like to ask you, all of you, a question. How many of you have seen mirror today? Mirror, not magazine. आईना, आईना. सब लोगों ने आईना देखा? तो जब आपने आईना देखा, once you have looked at the mirror, what did you check? What did you check? Your face. How are you looking? Looking good, bad? Whether your dress is okay, not okay. But for what? But for what? क्यों चेक किया? क्यों चेक किया? Anybody? Yes, some of the students have tried. Yes. Anybody? You want to come to college. So whether my attire or whatever I have worn is befitting to attend the class or not. And same thing happens for any other occasion. Suppose you are going for a marriage, you prepare accordingly yourself. So it is situation based. So you prepare yourself as per the situation's demand. Okay. So now what I have basically understood from the brief which was given to us is that we need to discuss something on the impact of social media on talent acquisition. So we are talking about two things here. One is social media and another is talent acquisition. Right? There are two different things. Why did I start with this is, so are you present in social media? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So are you present in, so that is, so the mirror is there, the social media, and you are present there. Now the next thing is acquisition, talent acquisition. So are you ready for talent acquisition or to be acquired by any company? No. Mostly it is no. Mostly it is no. How many of you agree with me that you are present in social media, various platforms, LinkedIn, Facebook, Twitter, there are other platforms. But are you ready to be seen by a future employer? So, anybody is ready? Where I see your profile in the social media and I can check with you that yes, this is the kind of person I am looking for? Nobody. So with this, I am resting my comment here and I will pass on to Saurabh to introduce the topic to all of you. But I would further develop on what I started with, so that after the discussion is over, all three of us will be helping you to make your presence felt in social media and how you can do that. And we will be open for your concerns, queries, because all of us collectively bring about 80 years of experience. Collectively, if you talk three of us, about 80 years of HR experience that we bring into you, and we will be happy to address your concern, queries about whatever you want to ask from
Okay. So thank you for listening to me for the initial few minutes. Over to Farooq. Hi, good afternoon everyone. थोड़ा सा जोर से बोलेंगे तो मैं भी बोल ओके डॉक्टर साहब जो बोल रहे थे तो मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था I can immediately relate to what he's trying to tell you guys. I recall last time when I was visiting an institute, half of the guys I saw actually going through my profile. आप लोग smart हो सबके सब, right? So and next day I had I don't know कितना सारा request on my LinkedIn to connect, especially from the students of that institute. And that realizes me that you guys actually are smart. Right? आप लोग स्कैन करते हो कि आप कौन है आपके सामने बात करने के लिए, तभी तो आप सुनोगे हमारी. Similarly, companies be smart हैं, smarter हैं rather. Right? People who are trying to employ you are much way ahead than what you think they are when they are scanning your social media profile nowadays. We as Simply HR, we recruit for a lot of our clients, some of the MNCs and all. And the kind of innovative strategies, if I may use the word, they use nowadays to scan the social media digital profile of yours is unprecedented, especially post-COVID, right? Because that is the first level whereby you get scanned. As Dr. Sahib was saying, अभी सर ने आपसे पूछा तो मैं भी आपसे एक सवाल पूछूंगा, right? Have you seen Amitabh Bachchan talking random stuff on his Twitter ever, right? Most of us we follow him, for example, right? Any sports person saying आज मैंने ये सब्जी यहाँ खाई, they are selling themselves as the product on social media, right? Now imagine if somebody scans your social media and there's अच्छा 4 like 5 ये गबरू दी गड्डी, right? Now once we are there in social media, we are trying to say this is what we are, is something which needs to be very, I should not say seriously, that's not your age to be serious in life by the way, but a bad job, yeah, sorry, I forgot. But most importantly, when you are there in social media with an objective that you need to have the best companies to be attracted to, right, to be there, you need to be doing all those baby steps in terms of getting your social media connections right. Getting into small steps like subscribing to the newsletters of various companies or various consulting firms or various platforms which are related to your own domain and specializations, right? Now, अगर आप HR कर रहे हैं, you know that there are HR people also. Now, how many of you have probably subscribed to Harvard Business Review or something like a label or reporter? I don't know, right? I never did that when I was doing. अभी हम यहाँ बैठ के आपको ज्ञान दे रहे हैं, right? I never did that. And then I realized that if I would have done that today, right, I would have been much wiser. Right? It would have taken me a very small stint of time to be there where I wanted to be. Right? वो काम आप आज कर सकते हो. Trust me, the companies who are there, they are also getting smarter in terms of how to hire from social media platforms. Right? We have seen that a lot of recruitment consulting firms have shut shops during COVID, right? Because companies are not seeing much value there. Now you see a lot of the companies are moving to their own social media presence to even ask for people to apply. Right? They are using. How many of you watch reels or shorts? No need to be embarrassed, right? Right? Now most of us would know people like Pesu Pepper, right? All of you know? Acha. Okay, then maybe I am a little ahead. But how many of you know people who are actually selling flats on social media through reels? Right? There's a guy called I think Avin Gandhi or somebody. He makes short stories on English, how to be smart in terms of English. Right? Small stories. Amazing fan followings these guys have. Right? There I see a lot of companies taking cue, and it will not be for long. Very shortly you will see companies also getting into reels to reach out to you guys, or shorts to reach out to you guys. Correct? Please tell some companies. Sir, I don't remember the companies, but I was scrolling once and there was something internships and everything. You can apply for jobs if you are in this year and that. That's very interesting. So अगर होता है, so see the companies are already adapting to that change.
where they say enough of those consultant calling and stuff like this. We want to reach out to masses in one go, right? One simple tweet, we reach out to 100 people, 200 people. Yeah. So there's also one company named Bisgurukul. Can you be a little louder? Sorry. So there is also one company which names Bisgurukul, and it also provides some kind of internships and affiliate marketing and freelancing stage. So that's also company where I'm working at that place. So perfectly fine. I think so. Thank you. I think good that you guys are giving all those insights. This is important for. Okay. Was it for the lady? It can't be for me, right? So I think this is what we've seen changing in terms of how social media is now getting transformed into job creations and something which we never thought 5 years ago it was possible. With those passing notes and all, I would rather say Nanda sir to take it along from here, to add on to whatever aspects me and Dr. had added, and then we'll probably be happy to answer whatever queries you may have, or whatever clarifications, questions you want to have on whatever points we raise. Sir. Thank you so much, sir. So, words of wisdom coming from two veteran stalwarts. So, what I want to share with you is, मेरी आवाज आ गई पीछे? How's the जोश? Great. जो सोए होते जाग पड़े क्या हुआ? Great. तो अगर आपकी लाइफ स्पैन को सोशल मीडिया में डालो, तो दो चीजें बड़ी क्लियरली निकल के आएंगी. जब तक स्कूल में थे तो फेसबुक पे थे, कॉलेज में आए तो इंस्टा पे थे, कॉलेज से निकलेंगे तो टिंडर पे थे, और जब नौकरी में चले गए तो लिंक्डइन पे थे. ये तो वाली सोशल मीडिया प्रेजेंस. वो क्या रिपीट करता हूँ. स्कूल में थे तो फेसबुक पे थे, कॉलेज में आए तो इंस्टा पे थे, कॉलेज से निकले तो टिंडर पे थे, और नौकरी में आके तो लिंक्डइन पे थे. और उसके बाद जब मम्मी पापा का पैसा आया तो shadow.com. तो दिस इज पहले ह्यूमन लाइफ होती थी. बच्चा पढ़ता था जी, कॉलेज में जाता था जी, नौकरी ढूंढता था जी, स्ट्रगल करता था जी. आप कह रहे हैं इंस्टा पे जी मेरा लड़का आज. बेटा क्या करते हो? सर मेरे 5000 फॉलोअर्स हैं. बोले करते क्या हो? बोले इंस्टा करता हूँ जी. बट इट्स अ प्रोफेशन. द अदर डे मेट अ यूट्यूबर. बोले क्या कमा लेते हो? 2 लाख रुपए महीना. अब बोलो. यस, इट्स अ प्रोफेशन. ही इज अ ब्लॉगर जो ट्रैवल करता है, अपने ट्रैवल ब्लॉग्स लिखता है, एंड इट्स अ प्रोफेशन. तो सोशल मीडिया को कुछ ऐसा मत समझो कि भैया अगर उसमें है तो यार गलत है, नंदा जी पूछ रहे तो मत बोलो, हाथ मत खड़ा करो. सॉरी, मैं दिल से जानता हूं तुम्हारी उम्र के मेरे बच्चे हैं कि मुझसे ज्यादा वो सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं आज की डेट में. सो व्हाट एवर फेस ऑफ लाइफ यू आर, आज की डेट में यू कांट डिनाई सोशल मीडिया. इसको यहीं पे विराम दे दो. दूसरी चीज, जब हम स्कूल में 6-7 पे थे तो हिस्ट्री कैसे पढ़ाई जाती थी? BC एंड AD, बिफोर क्राइस्ट एंड एनो डोमिनी. ठीक है ना? बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट. आज की डेट में द होल कंसेप्ट हैज चेंज्ड. इट इज BC मींस बिफोर कोविड, अब उसके बाद है आफ्टर कोविड. दुनिया बदल गई, लाइफस्टाइल बदल गया. मेरे जैसा बंदा जो 2 रुपए ना खर्चे पेटीएम में आज की डेट में सारे ट्रांजैक्शन डिजिटल करता है, थैंक्स टू कोविड. जो किराने की दुकान पे जाके बोल बाल करके सामान खरीदता था, आज आई गो टू बिग बास्केट. व्हाट इज दैट? ई-कॉमर्स. मिंत्रा से मेरे बच्चे कपड़े खरीदते हैं, मीशो पे मेरी वाइफ चली जाती है. तो अल्टीमेटली ये क्या है? दिस इज एन अमैलगमेशन ऑफ सोशल मीडिया प्लस ई-कॉमर्स. और आगे जाके जो वेबसाइट्स आने वाले हैं या जो एप्लीकेशंस आने वाले हैं, उसमें कोई क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं होगी. It will be Tinder plus Insta plus LinkedIn rolled into one. ये सच्चाई है. So you will be parallelly looking for a fiancé and a job on the same side. ये नहीं चला तो वो तो मिल जाएगा. This is the reality. जब Facebook शुरू हुआ था तो लोगों ने सिर्फ अपने पुराने क्लासमेट्स को ढूंढा था. मेरे टाइम में. आज की डेट में योर जनरेशन डज नॉट टू गो टू फेसबुक बिकॉज यू आर ऑल कनेक्टेड ऑन व्हाट्सएप. तुम्हारा स्कूल का ग्रुप अलग है, कॉलेज का ग्रुप अलग है, फर्स्ट ईयर वाला ग्रुप अलग है, थर्ड ईयर वाला ग्रुप अलग है, मैथ वाला ग्रुप अलग है, सर वाला ग्रुप अलग है, और एक फैमिली ग्रुप अलग है. और फैमिली में भी यंगस्टर्स का एक अलग है जिसमें नानी दादी नहीं है.
Yes, sir. तो आप देख रहे हो कि किस लेवल पे बॉस आपकी सोशल एक्टिवेशन है। आज हिंदुस्तान में 3 दिन के लिए व्हाट्सएप बंद कर दो, कोहराम होगा, कोहराम। लोगों को समझ नहीं आएगा दिन की शुरुआत हुई है कि नहीं हुई है। हाँ, सुबह 12 गुड मॉर्निंग के मैसेज नहीं आएंगे या 12 गुड नाइट के मैसेज नहीं आते तो नींद नहीं आती रात में। So this is how the social media is, engulfing our personality, our life. Well, I try to, make a very important topic into a very, light-hearted conversation. Just to draw home 2 things. पहली चीज, you can't avoid social media. You are part of it. तुम में से एक भी अगर मुझे कहे कि सर I am not on social media, we need to take you to a psychologist. भाई कुछ तो गड़बड़ है, दया, कुछ तो गड़बड़ है। दूसरा, जैसे सर ने बोला, the future of all recruitments in some way or the other is going to be linked to social media. आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस, आपकी प्रोफाइलिंग, ये सब चीजें मैटर करने वाली हैं। जब I as a recruiter I am going to scan 10,000 resumes, तो मुझे immediately पता चल जाएगा मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्योंकि आज की डेट में हर चीज की प्रोफाइल्स अवेलेबल है। And there are algorithms which are working in the background to search, help, define and give you the results. So I would like to stop here and then probably carry the conversation further. Sir, I would like to ask that what actually the HR professionals will look into the fresher candidates basically, because as all are the students only, the majority of the audience is the students. So what actually the organization they look for, because here the topic is regarding the talent acquisition. So because it is not easy for the people to sustain in the organization if they do not have the talent, right? And this is the only thing that makes a difference within the organization, right? And so my question is that what actually they look for? So what are the things, what are the characteristics, what are the attributes they look for, like in the candidates? मैम 2 चीजें हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब सोच रहे होंगे नौकरी ढूंढना मुश्किल है, उससे बड़ा चैलेंज हम तीनों को है, एक सही बंदे ढूंढना मुश्किल है। It's a bigger challenge for us, smaller challenge for you, because तुम एज इंडिविजुअल नौकरी ढूंढ रहे हो, हमारे पास 2 लाख रिज्यूमे आ जाते हैं, उसमें से ढूंढ लो। इट इज वेरी टफ। तो आप लोगों का ना 2 पॉइंट्स पे आके हम लोगों से इंटरेक्शन होगा कि हम किसी भी कॉर्पोरेट से। पहला आएगा जब आप समर इंटर्नशिप पे जाओगे। जब आप समर इंटर्नशिप पे जाते हो तो देयर आर कॉर्पोरेट्स विच कम टू योर कैंपस एंड दे डू सम टॉक्स to give you a brief, we are MRF Tires or we are Aditya Birla or we are, Tim Horton or we are Starbucks and we want to do something. बेटा इसको जरा सही करो। नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमको डिसहार्टन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लोगों को ना बहुत एक दिमाग में फैंसीफुल थॉट्स होते हैं कि रिवॉल्विंग चेयर होगी, सीबीयू होगा और इधर मैकडॉनल्ड से बर्गर्स आएंगे और आई हैव अ ब्यूटीफुल सेक्रेटरी एंड एवरीथिंग विल फाइन। और 30 साल में मेरे को सीबीयू तो नहीं मिला, समझ गए? तो इट इज इफ यू हैव टू रीच द कॉर्नर रूम्स देन यू हैव टू स्ट्रगल, बिकॉज कॉर्नर रूम जब मिल जाता है ना तो उस कॉर्नर रूम में बैठने का टाइम नहीं होता। आई वाज ट्रैवलिंग 28 days a month in my career when I was at the top. वो कमरा जरूर था, आज सीबीयू नहीं था, बहुत बढ़िया व्यू था, समुद्र नहीं था, दिल्ली में नहीं है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन तुम कमरे में बैठ कहां सकते हो? तुम एक मीटिंग से दूसरे सेशन, मतलब कॉर्पोरेट लाइफ क्या होती है ये आई जस्ट वाइंड अप इन 1 more second। आप बैक टू बैक 14 दिन का ट्रेवल कर रहे हो, 15 दिन ऑफिस वापस आना है, 7-8 दिन के बाद ऐसी सिचुएशन आती है, अगर एयरपोर्ट पे आधा घंटे आंख लग जाए ना, हंसना मत, तुम आंख खोल के ये पूछते हो मैं आ रहा था कि जा रहा था। You don't realize, फिर बोर्डिंग पास देखते थे बैंगलोर था या पुणे था, एयरपोर्ट सारे एक जैसे लगते। That is what is burnout.
तो उसके लिए रेडी रहो। बॉस कहेगा बॉस कल सुबह गुवाहाटी, यस सर, शाम को चेन्नई, यस सर, चेन्नई में आप 18 दिन, ओके सर, नहीं सर मेरी तो गर्लफ्रेंड का बर्थडे है सर, सर वैलेंटाइन आएगा बीच में, आता था अब नहीं आएगा, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में बिलीव करो, राइट? तो ये रियलिटीज ऑफ लाइफ है। मैं थोड़ा नमक रगड़ रहा हूं ताकि तुम्हें जल्दी से एहसास हो जाए उस चीज का। आई मे नॉट साउंड वेरी पॉश, बट ये ग्राउंड रियलिटी समझा रहा हूं। इसको जितनी जल्दी सीख लोगे, समझ लोगे, अपने अंदर उतार लोगे, उतना ऑर्गेनाइजेशन में लास्ट कर पाओगे, राइट? ओडीसी Sir, one more point I would like to add, that although the social media hiring that has made the life of the job seekers and as well as the job providers very easy, right? But then too, with the increased use of the social platforms, the fraudulent practices have increased a lot. What I find is, and I have seen number of cases, because as it recently happened with some of the IT firms also, that after onboarding the employees, they realized that they had submitted the false documents and they had to face the problem of talent shortage after hiring. When they had actually started working within the organization, then they had to say that please leave. So such kind of problems the organization they are facing nowadays. So I would like to discuss this thing. Two things, then I'll pass on. एक चीज कंसेप्ट जो पिछले 6 महीने में हिंदुस्तान में बहुत सुना, जिसको बोलते हैं मून लाइटिंग। सुना है? क्या होता है? स्विचिंग नहीं बेटा, पैरेलली 8 जगह नौकरी करना, 4 जगह नौकरी करना। इट इज लाइक हैविंग 4 गर्लफ्रेंड सेम टाइम। तो एक कोई पता चल गया कि 3 और हैं, तो फिर देख तुम्हारा क्या होता है। तो एक एम्प्लॉय को पता चल गया तो एक और काम कर रहा है, वो मेक श्योर करेगा पता लगे बाकी 2 कौन सी है। तो बहुत सारे विप्रो निकाले, इन्फोसिस ने, कईयों ने निकाले, लेकिन अभी पिछले 15 दिन में एक और स्कूल ऑफ थॉट आ गया है, मून लाइटिंग इज हियर टू स्टे। बोले यार तुम 2 टाइमिंग 3 टाइमिंग रोक ही नहीं सकते यार। जब मेरी कंपनी वर्क फ्रॉम होम पे है और तुम मेरा सारा टारगेट पूरा कर रहे हो, जितना तुम्हें प्रोग्राम लिखने को बोला था एज आईटी प्रोफेशनल तुमने कर दिया, तुम्हारे पास फिर भी 7 घंटे बाकी है, तू जो मर्जी कर भाई। लेकिन अगर मेरे काम में 1% की कमी हुई तो नहीं छोड़ूंगा, और अगर मेरा काम बढ़िया है तो डू व्हाटएवर यू वांट इन योर फ्री टाइम, एक्सेस टाइम, एक्स्ट्रा टाइम, जो मर्जी करो। उसके साथ एक और एस्टेरिस्क भी लगा हुआ साहब, that you have to declare what else you are doing. It should not be that तुम इन्फोसिस में भी काम कर रहे हो, टीसीएस में भी काम कर रहे हो, who happen to be competitors. वो नहीं हो सकता। तुम विप्रो में भी काम कर लो, एक्सेंचर में भी काम कर लो और सेम डोमेन हैंडल कर रहे हो, तो वो तो बस इट इज लाइक फ्रॉड, यू कांट डू दैट। तो गलत काम मत करो। 2 टाइमिंग 3 टाइमिंग आज की डेट में प्रोफेशन में भी, गर्लफ्रेंड में भी अलाउ, कोई दिक्कत, बॉयफ्रेंड। So that is happening today. That's the reality. You have to live with it. दूसरी चीज जो fraudulent practices है, कभी गलत चीज मत बोलो दोस्त, तुमसे पहले तुम्हारी रेपुटेशन ऑर्गेनाइजेशन में पहुंच जाए। Your reputation travels before you reach the organization. तुमने विप्रो ज्वाइन करना है, इससे पहले तुम विप्रो में पहुंचो। ऑलरेडी वहां पे 4-5 लोग जिस डिपार्टमेंट में तुम ज्वाइन करने वाले हो ना, तुम्हारे में पूरी रिसर्च कर चुके होंगे। वो टिंडर पे भी चेक कर लेंगे, वो फेसबुक पे भी चेक कर लेंगे, वो इंस्टा प्रोफाइल भी चेक कर लेंगे, लिंक्डइन तो पहले एचआर कर ही चुका है। उनको एग्जैक्टली पता है ये मुंडा आ रहा है, ये उसकी हरकतें हैं। तो डोंट थिंक दैट यू आर अबव लॉ और किसी को तुम्हारे बारे में पता। सोशल मीडिया होने के कारण नो वन हैज एनी प्राइवेसी। यू आर एज ओपन एज इन योर बाथरूम, यू आर विजिबल टू एवरीवन। तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम कहां जाके क्या क्या कर रहे थे, कौन सी हुक्का बार पे बैठे थे, क्या था, तुमने फेसबुक पे डाल रखा है, सब कुछ पढ़ लिया है, और तुम बोलो नो सर आई डोंट इवन गो टू बार्स। बेटे ये तेरे चाचे की फोटो। तो हर चीज ट्रेसेबल है, बैकवर्ड हर चीज ट्रेस की जा सकती है। तो ये तो हुआ प्रेजेंस। दूसरा हमने जैसे कहा फर्जी सर्टिफिकेट, गलत स्टेटमेंट्स। हाँ सर मैं 3 साल पहले एक्सेंचर में था, सर्टिफिकेट है, हाँ सर वो मिसप्लेस हो गया था, कितने दिन मिसप्लेस हो गया था। अभी हम एक्सेंचर में मैनेजर मेरा दोस्त है, फोन करके पूछ लेते 10 मिनट में पता चल जाएगा सच है कि नहीं। विवेकानंद जॉब करता था, नहीं सर ऐसा नाम का तो कोई बता ही नहीं था हमारे पास। बात करता, यू लूज योर जॉब दैट देयर एंड देयर। So never give wrong statements, never give wrong certifications, never give something which you have not done in your life. Don't overstate. एक और सेल्स एंड मार्केटिंग वालों की बड़ी अच्छी आदत होती है,
पुरानी कंपनी में टारगेट था 22 लाख महीने का। सर 1 CR, आई यूज्ड टू डू 1 CR। उस सामने जो बैठा है वो घास काटता था क्या पहले? वो भी तेरी उम्र में था कभी? कौन सा सेल्स एग्जीक्यूटिव है जिसको 1 CR का, अगर 1 CR का टारगेट तू कर रहा था तो तू चीफ एग्जीक्यूटिव क्यों नहीं बन गया? फिर वो जब अच्छी तरह से उधेड़ेगा ना तुमको, फिर तुम्हें समझ आ जाएगी कि he knows more than you. You don't try to teach, you know, someone who's experienced in that field. तो कभी ज्यादा हीरो मत बनो, ज्यादा स्टाइल मत करो, बी डिग्निफाइड, बी डाउन टू अर्थ, ऐसे बच्चे अच्छे लगते हैं। और ज्यादा स्टाइल मारो और वो ऐसे से बाल कर करके ना बनने नहीं चाहिए। कोई रिक्रूटर वाला नहीं लेता ऐसे बंदों को। People love students, girls, boys, anyone who's down to earth, talks basics, doesn't flaunt any style, ego. घर में छोड़ के आओ बाहर, मंदिर के बाद चप्पल छोड़ के आते हैं ना, ऑफिस के बाद ईगो छोड़ के आए। We don't want your ego inside. Please leave it outside. अगर ये कर सकते हो तब तो कॉर्पोरेट में आओ, क्योंकि वहां पे मारा भी जाएगा, पीटा भी जाएगा, उधेड़ा भी जाएगा, चीका भी होगी, चिल्लाई भी होगी, सब कुछ होगा। ऐसे तो मेरी मम्मी भी कभी नहीं कहा, मम्मी थोड़ी ना कॉर्पोरेट में थी, यहाँ मम्मी के डैडी बैठे हुए हैं और जो पैसे देता है वो चिल्लाएगा। मैं सीधी बात बता रहा हूँ, कॉर्पोरेट कल्चर अच्छा भी होता है, एंड समटाइम्स व्हेन यू डोंट डिलीवर, व्हेन यू फेल टू डिलीवर, व्हेन यू जस्ट गो हेवायर, देन डोंट एक्सपेक्ट लाइफ टू बी बेड ऑफ रोजेस। यस्टरडे आई वाज इन बैंक में, नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं मैनेजर के साथ बैठा था एंड ही वाज कॉन्स्टेंटली स्कोल्डिंग द गर्ल हु वाज सिटिंग नेक्स्ट बिकॉज़ वो डिलीवर कर ही नहीं पा रही। उसको एक्स कहता था, वाई करती थी, वो वाई कहता था, वो जेड करती थी। मैंने बोला आज मेरे जाने के बाद इसकी तो पैसा डंका लगने वाला, पक्की बात। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू, व्हाट इज डिजायर्ड ऑफ यू। तुम में है बड़ी अच्छी बात है, नहीं है तो बिल्ड योर कैपेसिटीज। बॉस को खुश करना एक बात होती है और अपने काम को एक्सेल करना एक अलग बात होती है। Everything can't be done just to please the boss. अगर वो बॉस नहीं रहा तो खत्म हो जाएगा, right? So, what I feel is that there are two things that are necessary to work effectively. So one thing, yes, definitely that the candidate should be capable of doing the work. They need to have all the abilities. But along with that, there is another thing that is very important, and that is one should have the willingness to work effectively. Because unless until the willingness is lacking, the employees, they won't be able to perform. So although you have all the capabilities, the skills, the other things which are necessary, but if you do not have that willingness, if you do not have that zeal to work, so definitely you are not going to be result oriented. That's a very interesting thing. मैं आपको ना एक अपना real life example से देता हूँ. So when I joined ITC, I used to have again I don't want to name because you can find that person anywhere, right? So I used to have my colleague who had been there 5 years senior to me in HR, and that's a practical thing job, बोलो ना, willingness. And that was I think 97, internet नया इंडिया में आया था, right? We had those dial-ups and all. आपने शायद आवाज भी नहीं सुनी, बड़ी खतरनाक dial-ups की आवाज होती थी उस टाइम. एंड हमारे एचआर में पहली बार एक इंटरनेट कनेक्शन मिला ऑन वन कंप्यूटर एंड माय एचआर हेड सेड कि यार आप लोग ना इंटरनेट सीख लो। जेंटलमैन सेड यार मेरी शादी वादी हो गई, ये बच्चा है, तू देख ले यार। एंड आई जॉइन, मतलब मैं अकेला ही था, तो आई सेड चलो मैं सीख लेता हूँ, राइट? इट्स नई चीज। एंड दैट्स अगेन द टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग सो फास्ट, यू नीड टू बी अडैप्टिव टू व्हाट चेंजेस आर कमिंग। एंड माय बॉस एंड शी वाज सो प्रैग्मेटिक, बोली तू, आई टोल्ड हर, आई सेड क्या करूं इस पे बैठ के? बोली तू कुछ कर, तू बैठना चैटिंग कर तू जाके, लेकिन कर। यू नो व्हेन आई वेंट एंड स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग, आई सेड ये तो बड़ा अच्छा चीज है। एंड देन आई टोल्ड हर कि अच्छा हम इससे ना क्या हम जॉब भी पोस्ट कर सकते हैं। यू नो यू लर्न एंड देन यू फाइंड आउट कि नई नई टेक्नोलॉजीज एंड हाउ टू बी। एंड आई थिंक इन दोस 3 years बिकॉज ऑफ दिस I superseded that fellow and I became his boss. Wow. Right? In 3 years. Now the problem was, and the problem will come to all those people who are fast movers, right? That in 3 years I hit my ceiling in that company, right? So I had to go for better revenues because I was very raw to manage such complex relationships where your juniors are 5 years elder to you, right? I was not mature.
And that is a mode of, that is a kind of, and that's why I tell companies कि जहाँ पे आप बहुत अच्छे लोग हायर कर लेते हो वो भी आपके लिए प्रॉब्लम है, right? You don't need the brightest of people, you need the most suitable people, right? हम लोग एक हायर, Very true, sir. हम लोग ये बहुत गलती करते हैं, इसे सबसे अच्छा आदमी चाहिए, इसे नहीं चलता भैया, सबसे सुटेबल आदमी चाहिए मेरे को। एक IIT IIM हायर करोगे ना वो 2 साल में छोड़ जाएगा, एक नॉर्मल बीटेक ले लोगे ना 5 साल में ही नहीं जाएगा। So 3 साल पहले जब मैंने शुरू किया था as a very promising candidate, in 3 years I was like misfit in the entire scheme of things, right? I had to leave, and I recall my discussion with my boss was for 5 minutes. I said, here is my offer from I think Reliance, yeah, and she said, yes, you go, right? Because as a company also, वो बोलते हैं your wings were so, she used the word, your wings are so vast, right? We can't stop you from flying, right? Go, right? Frequenting Earth some 6 million, 7 million years ago. बिग बैंग से पहले दोनों साथ एग्जिस्ट करते थे। अभी बिग बैंग हुआ तो उसके बाद पानी भर गया पूरा धरती, राइट? अभी डायनासोर्स तो बेचारे परेशान हो गए, खाना ही नहीं मिलेगा, दे गॉट एक्सटिंक्ट। क्रोकोडाइल को समझ में आ गया, वो अडैप्ट कर गया, वो बोला मैं पानी में भी तैर लूंगा, राइट? नाउ कट टू दो 6-7 मिलियन ईयर्स नाउ, क्रोकोडाइल्स दे स्टिल एग्जिस्ट। अगर आप अडैप्ट नहीं करोगे ना दुनिया की, और हमारे टाइम में तो इंटरनेट आते आते 10 साल लगा, फॉर एग्जांपल उस लेवल पे। आज की डेट में अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलोगे 3 साल में आने वाली है, राइट? इफ यू स्टिल रिमेन यार मेरे लिए फेसबुक इंस्टा ही बहुत है, राइट? इतना मैंने सीख लिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ जाएंगे, जैसे सर बोल रहे थे टैबलू एंड, तो आप उस पर जब तक काम नहीं करोगे एक्सेल वगैरह से, तो ये आपके ऊपर चूज करते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ ये आपके ऊपर चूज करते हैं कि आप डायनासोर बनना चाहते हो कि क्रोकोडाइल बनना चाहते हो, राइट? अगर क्रोकोडाइल बनोगे तो 6 मिलियन ईयर्स जी जाओगे, राइट? वो कैटास्ट्रॉफिस वगैरह झेल जाओगे। अगर रिजिड हो गए तो डायनासोर जितने बड़े होगे तो भी एक्सटिंक्ट हो जाओगे। दैट्स द Stories have changed now. So the story of a crocodile and a rabbit. So that now we are not following that traditional one. So instead of being slow and steady, so now it is that we have to be fast and steady all the time. Can we open the session for open question and answers? Any questions? We'll be happy to answer your questions. आप पीछे, someone is not to ask you question. माइक पीछे देने के साथ आप पूछे। Sir, what are the key skills you as recruiters look into candidates, and how to handle the mental issues? Because according to the recent studies, mental health issues in India has increased. I think you are mixing two things. Two questions, sir. Two questions. The first is to answer your question, if I ask you why should I hire you? So you ask me a question that what should I look for you so that I hire you, right? That was the question you asked. I am asking a different question to you. Why should I hire you? Sir, I am hardworking. You are hardworking. Okay. Sir, I am curious. I like to very question. You are hardworking. Anybody who tells me that I'm hardworking, Sir, curious. I am curious also. never use. I'm telling you. Anybody who tells me I'm hardworking, I give the same question back. I think with your logic, the rickshaw puller should be millionaire today. Same thing that was coming to my mind. So get away from those cliches. Sir, I am smart. Okay. That's better. That's better. Yes, smart work. So my next leading question will be to you is that can you show us some evidences where you have shown your smartness? Sir, I asked you this question. So you don't have the answer. So that means you are not smart. Sir, that's why I have asked first. Okay. So if I have to give a common answer to all of you, right? So if somebody asks me that why should I hire you, I will give 3-4 reasons. Right? The first reason I will say that I like your company, and the company, what you do excites me, and somewhere I relate myself doing this kind of job. So that is one. The second thing that so I've prepared myself, so I will definitely give some inputs about the organization, that this is what you are, and this is what your competitors, this is what, so I will give you some idea about the company so that you feel that I am connected to the company. So
I know something about it. So I get some affinity to you. That is one. The second thing I would say that I have gone through the JD of the profile, so whatever, and I feel that my skill sets, my experience matches to most of the job that you are expected out of this person. That is the second thing. The third thing I will say that since I know the job, I have the required competencies or skills, you will require less supervision onto me, because nobody would like to invest time to give you skills to perform the job. So I will relieve you from that pressure, that if you hire me, I will ease your manager's responsibility, because I know the job, I have been doing it. So you can focus on something else, not on me. So I will be employee to deliver from initial day 1, 2, 3, I will start delivering. That is the third thing I will say. The fourth thing, probably I will say, my personal value systems matches with your work ethics. And I've seen your people, I've gone to the testimonials of your website where people are celebrating, I also like celebrating. And somehow I will conclude my discussion that if you hire me, I will add value to your organization. So, and all these will definitely lead to, this is how, what I do. I will bring the interviewer into my code. वो interviewer मेरे code पे आ जाएगा. Because this is the way then he will start asking, अच्छा ये JD में ये लिखा था तुमने क्या किया ये बताओ. So then I will start saying this is what I have done. And then again I will start using star Sir, sorry to interrupt. Listen students, all of you, listen to sir very carefully. Very important and very beneficial points he is adding. Yeah. So I think देखो यहाँ पे भी फर्क नजर आ रहा है. इस पूरे क्लास में भी you can create a bell curve. कितने लोगों को इंटरेस्ट है, कितने लोगों को इंटरेस्ट नहीं है. Right. तो पता चल रहा है. इसी क्लास में पता चल रहा है who is interested in our talk, who is not interested in our talk. Right. So जो लोग प्यार से और समझ के और इंटरनाइज एसिमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, डेफिनेटली उनको जब वो कमरे के बाहर जाएंगे, आईना देखेंगे, तो उनको अपनी असलियत पता चलेगी. Where actually you are, and whatever we have discussed, we have taught or shared our experiences, you definitely scan your profile. Am I ready for the job or not? So if you get the assessment, then the work is easier. The first you have to accept that, okay, I am not ready. You may be good at academics, but you are not ready. To be ready, you have to do these things. And if over a period of time, if you start gradually doing these things, your likelihood of getting campus selection is much higher than people who are not investing in themselves. Very simple exercise. Start doing things, stop doing things, and continue doing things. अपने पूरे एक्शन को 3 टुकड़ों में बांट दो. क्या रोकना है, क्या शुरू करना है और क्या कंटिन्यू करना है. And every day you see the mirror, and you will find yourself closer to your dream job. So this I think might have been able to answer your Yes, sir. Yes. What was the second question? Sir, what we can do to manage our mental health issues, because according to the recent studies, the mental health issues in India has increased. तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें मुझे पर्टिकुलर इंडिविजुअल की पर्सनल लाइफ और साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा. It is there cannot be a generic answer to this question that what you should do. अगर जेनरिक आंसर मुझसे चाहते हो तो मैं बताऊंगा कि किसी ना किसी हॉबी को फॉलो करो. क्योंकि हॉबी चाहे वो गार्डनिंग हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे प्लेइंग गिटार हो, है ना, या स्पेंडिंग टाइम विद समवन यू लव और गो टू ऑर्फनेज, ये आपको डी स्ट्रेस करता है. तो ये जेनरिक मैं आंसर दे सकता हूँ उसका. और कुछ कंपनीज में रिचार्ज रूम भी होते हैं, फैट होता है रिचार्ज रूम में. गो देयर व्हेन यू फील स्ट्रेस्ड आउट. बॉक्सिंग का वो लगा रहता है, आप कुत्ते मार के आ जाओ तो स्ट्रेस आउट, उस बॉस को गाली दे दो, वैसा होता है. फिर या फिर सुधीर म्यूजिक सुन लो, या कुछ किसी गुरु महात्मा की वो लेक्चर सुन लो. तो वो सब चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन फैट्स हैं, लेकिन ये आपको खुद पर काम करने की जरूरत होती है. जब खुद स्ट्रेस करते हो ना, तो आपको खुद पर काम करने के व्हाट आर दी फैक्टर्स दैट इज क्रिएटिंग स्ट्रेस ऑन यू. यू टू फाइंड दैट.
and you have to find that and you start working on that. Once you do that, you will come out of that. But there is no generic answer to that. Is to de-stress yourself, you should start doing this. उसके ऊपर passion जरूर follow करो. Yes, passion, hobby. Have a passion. And they heard the sound of rolling the sound, lion. They started running. One boy stopped and he tried to take out his shoe. He said, "Fool, what are you doing? You cannot run faster than the lion." He said, "Don't worry, I can run faster than you." So the time will be that you have to be the fittest. And today's program was really meaningful, useful and fruitful for you. I thank all the panelists. And especially the Sheetal and other colleagues who made this program successful, and Sheetal ji who guided them. We will make such programs time and again. I request all the students, please note it seriously. You have to sit silently when such programs are there. Otherwise, you are losing a lot. With these words, I thank everyone, and especially to those dear students who raise very meaningful questions before the panelists. Thank you very much, sir. Thank you, sir, and thank you everyone for joining us today.